Hello guys, today I have discussed the solitary reaper written by William Wordsworth. William Wordsworth always trying to level best about the superb scenery of the village. A village lad always trying to level best about the her beloved or remembering person. Today I have discussed with you three stanza already discussed with you. Today's number 4, a voice so thrilling never was heard. According to poet, the voice arised the girl is not heard before the long time. So a voice so thrilling never was heard is springtime from the cuckoo bird. You know cuckoo bird who is singing only springtime. Then he compared with a voice so thrilling never was heard in springtime from the cuckoo bird. Cuckoo bird which means is कोयली. गाँ गली जो कोयली माने कू कू राब करती गछ डाल बसिकी तांको का सहित तुलना करा जायछि ना ए वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वाज हार्ड दी मैड which means is the girl who was ripening and singing herself as a song, that melancholy song, also plaintive song, also behaved the song like you remember most of the time, like she does not living and a living with her in springtime from the cuckoo bird. तेणु आमर बसंत ऋतुर कोयली जमी गछ डाल बस कुहू कु राब कै ता स्वरटा शुणापी आम मानक जमी भल लगे ठीक से भाया ये जो झीटर स्वर क्या लगुच ना कवि की लगुच कवि कौन कर ना निजको क्या सहित तुलना कर गीतटा को ना से झीर गीत सहित कोयलीर स्वरटा को ये तुलना कर दैट इज कम्पेटिटिव बिटवीन इच अदर कको बर्ड विथ द मैडनेस ऑफ द गर्ल. देन यू सी ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज. समुद्र उताल तरंग को ये स्वरटा कौन कर भंग करुँच ब्रेकिंग कर भांगुची दि साइलेंस ऑफ द सीज. समुद्रर जो उताल तरंग आसूची बा जो ढेउ आसूची बा जो तरंगमाला आसी कूल बाड़े तार जो घर गर्जन बा कर्कछा बा क्राक साउंड बोली कहुँ से भंग करुँची. एमंग दि फार्देस्ट हेब्रिज. हेब्रिज मोस्ट ऑफ द आइसलैंड मैक्स ए हेब्रिज बोली कहुँ. अनेक उपद्वीपर मिश्रण में जोटा तैयारी करा जायछि ताकु स्कॉटलैंड भाषा रे हेब्रिज बोली कह जाउछि. देन यू सी एमंग द फार्देस्ट हेब्रिज. देन यू सी हेब्रिज उपद्वीप समूह बोली कह जाउछि. तेणु पिला माने लक्ष्य कर जो कह जाउछि ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज एमंग द फार्देस्ट हेब्रिज. अनेक उपद्वीप मिश्रण में जो बड़ द्वीपटे सृष्टि होती ता ना रखा जाए हेब्रिज. ता मध्य जो शब्द सृष्टि होती ये झीटर गीत कौन कर बारंबार खंडन करुँची. देन यू सी विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स. इफ समवन आस्क्ड मी द मीनिंग ऑफ द सॉन्ग आई डू नॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द सॉन्ग बट दैट वॉइस दैट स्वीट accord amused me by the creating myself as a Amazon. तेणु will no one tell me what she sings. कवि कहते मते कहीं पचार ना से गीतटार अर्थ कौन बा से गीतटा कौन गाँची से कथा मते कहीं पचार ना. परहाप्स दी प्लेंटिव नंबर्स फ्लो. प्लेंटिव which means is सैड म्यूजिक दुखपूर्ण भाव में जो गीतटा को स्वरायित करा जाए बा तरंगायित करा जाए बा कंपोज करा जाए ताको आम कौन कहते ना प्लेंटिव नंबर्स ऑफ फ्लो. ताने एतिकी करुण स्वर भासी आसूची मिलांकोली स्वीट एकॉर्ड बोली जोटा कह जाउची माने गोटे दुखरे मध्य गोटे स्वर रही ताको आम से बाजाटा बाजिला क्षणी आम मैंने जापर यहाँ कि प्रकार स्वर. फनीर गोटे स्वर रही बा गोटे भिलान गोटे स्वर रही से झीटी जो स्वर में गाँची
कविता को अनुभव करते ये स्वरटा निश्चित भाव में गोटे दुखपूर्ण स्वर बोली कहुच्छी। फॉर ओल्ड अनहैप्पी फार ऑफ थिंग्स एठू स्पष्ट अनुमेय होउछि अनेक दिन पूर्वर बा अनेक समय धरिकी तार निजर लोक कई जणे कुआडे जाइछि जे कि तार भेट ये पाउनाई बा तार खबर या पाखरे नाही। तेणु फॉर ओल्ड अनहैप्पी फार ऑफ थिंग्स फार ऑफ यू नो अबाउट लॉन्ग लॉन्ग एगो बहुत डिस्टेंस जोटा कहुच्छे अनेक दूर जार खबर अंतर एक पाखरे नाही बोली कहुच्छी। एंड बैटल्स लॉन्ग एगो अनुमेय होउछि स्पष्ट अनुमेय होउछि कौन बोधे से युद्ध क्षेत्र को जाइथिला जे कि एपर्यंत से फेरी पारी नाही बोली अनुमान करुछंती किए ना कवि। अकॉर्डिंग टू पोएट दैट पर्सन इज बिलव्ड दी यंग लेडी दैट नॉट रिटर्न्ड स्टिल लॉन्ग इयर्स एगो सो ही sang the type of song that music by the plenty which means is always trying to label back the man is only one that the nothing else before and after so he always trying to label back herself by the work hard and sing a song that means it's melancholy song which means it's harmonic song. Then you see or is it some more humble तार जो नमनीय भाव रही तार जो विनय भाव रही से गीत मध्यम एठू कवि कौन कर ग्रामांचल बास करुवा लोक माने बा महिला माने सेमानकर स्वर चाली चलन ए सब कथा को से कौन करती ना लेखा मध्यम आम आगे आणिकी थोई दियंती। आमे माने कई ग्राम कई सहर किए बा कौट रोना कहीं किंतु ग्रामांचल भाषा बा ग्रामांचल दृश्य बा आमे जाको इंग्लिश रे कहउचंती लैंडस्केप सीनिक बुली कुआ जाउची बा सुपर सैनिक बुली कुआ जाउची बा विलेज सैनिक बुली कुआ जाउची ताकू आमे कौन करचंती कवि ना निछळ भाव में वर्णना करचंती कौन करचंती ना और इज इट सम मोर अम्बुल्ले फेमिलियर मैटर ऑफ टुडे वी द पीपुल ऑफ विलेज ऑलवेज ट्राइंग टू लेबल बेस्ट अबाउट दी फेमिलियर विथ व्हाट इज फेमिलियर ना लैंड एंड फॉरेस्ट स्ट्रीम ब्रूम सी also like created by the God. God is created in this poem, but creator, those who are living and living that point of view, which is plenty systems of the poetry. Familiar matter of today, एटा हमर दैनंदिन जीवन रो आमे या सहित परिचित। Then you see some natural sorrow, loss or pain, जहाँ को आमे कहउचंती कोन नेचुरल sorrow वास्तविक दुख बोली जोटा कह जाउची। बॉर्न एंड डेथ बोथ आर नेचुरल बट बॉर्न इज हैप्पीनेस डेथ इज सॉरोफुल टू अस। सो फेमिलियर मैटर ऑफ टुडे एटा हम दैनंदिन जीवन घटना सम नेचुरल सरो लॉस और पेन क्षति करिबा जंत्रणा पाइबा एवं दुख प्रकाश करिबा एई कथाटा को जदि कवि वर्णना करछिन मान पाखरे जोटा से झियो पाखरे परिलक्षित करछंती बा अनुमेय करछंती दैट दी point of view or vital role makes the girl always trying to about the landscape area by the described by our poet. Some natural sorrow, loss or pain, then that has been and may be again, that again and again, more again, hearing by the poet. बारंबार जोटा कि तांका पाखरे प्रतिध्वनित होतुला। Then whatever the theme the maiden sang as if her song could have no ending. That song begin but no ending. Why? Now the valley is always echoed by the sweet echo that girl. The song is melancholy, plaintive, sorrowful, harmonic, also like kinds of sadness. But that sadness described by the poet, that poem always gives us a new miracle idea about those who are man and woman lived in the village or suburb area or village area or landscape area. He always trying to level best about the cornfield, the madness, trying to level best herself, those who are not knowing about the far distance of the country. So then as if her song could have no end, that song is no end. I saw her singing at her work. When the poem saw her, he singing
एंड ओर कहाड़ गीत गाउथुला एवं ता काम से करूथुला तेणु एंड ओवर द सिकिल बेंडिंग से कहा साहाय्य शस्य काटुला ना जो दा बोली आम कहते सिकिल मान हूँ कौन ना दा सिकिल बेंडिंग SICKLE सिकिल माने आम दा बोली जहाँ कहते से सेंस कहुच्छे जहाँ साहाय्य आम शस्य काटती से गहम हो मका हो कि तुम धान हो ताको आम कौन बोली कहते सिकिल बा दा बोली आम कहते से से कौन करुला काटुला एवं बांधुला एवं ता मनर भाव को से गीत माध्यम प्रकाश करुला क्या ना निजठू अधिक भल पाउथुवा निज प्राणठू अधिक भल पाउथुवा बा निज शरीर ठू जन को भल पाउथुवा व्यक्ति जनक संबंध में से आलोचना करुँच आई लिसन्ड मु शुणिली कौन ना मोशनलेस एंड स्टिल मु समस्त को कहली मु समस्त विषय शुणा चेष्टा कली कौन आई लिसन्ड मोशनलेस एंड स्टिल समस्ते निस्तब्ध हो जाओ के हलचल हो ना समस्ते कौन कर ना गोटे मोशनलेस मान निस्तब्ध हो जाओ स्थिर हो जाओ कहीं ना एंड आई माउंटेड ऑफ द हिल जिते बड़े मुझे कौन कली ना गोटे पर गोटे पाहाच आगू बढ़ी चलिली सेतेबेले कौन है ना से गीतटा मो कान पाखे क्षीण रु क्षीण हो गला मिमिक बाय द हेल्प ऑफ मिमिंग द एयर ऑफ मिमिंग व्हिच मीन्स इज द स्वीट एकॉर्ड इज एबोलिश विथ माय ईयर द म्यूजिक इन माय हार्ट I bore long after it was heard no more. Then you see, and as I mounted of the hill, जेते बेले मु से हिल रो गोटे पर गोटे पहाच दे अतिक्रम कली सेते बेले कोन हला द म्यूजिक इन माय हार्ट आई बोर सत्य कि मो कान को शुभा गला नाही बोर अर्थ हमर एठी प्रोज सेंस रहउची कोन ना क्लांत अनुभव करिबा बा विरक्ति अनुभव करवा एठी कौन कहूँ ना मत आ शुभा गला ना कहीं ना मुझे से जो झीटी गीत गाऊला ताठू ये दूरक मु आगू आगू चलिली से गीतटा मो पाखे कौन है ना धीरे धीरे क्षीण हो गला मिमिक होगला कहुच्छी लंग आफ्टर इट वाज हार्ड नो मोर किसी समय पर से गीतटा मत कि शुभा गला ना तार कारण हूँ कौन ना से गीतटा मो पाई आउ से पहाड़ उपत्यकार रही लोक मान कौन होगला ना धीरे 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 क्षीण होगला जोटा कि मत आउ बिल्कुल शुभागला ना से सेंस कहुच्छी कौन ना डिफिकल्टी वर्ड टेक डाउन द डिफिकल्टी वर्ड बिहोल्ड टू लुक और सी समबडी और समथिंग बिहोल्ड अर्थ हूँ देख तापर आसला कौन ना ओभर देयर ओल्ड यूज तार सेंस हूँ कौन ना फेयन सॉलिटरी सिंगुलर एलोन निर्जन एकुटिया तापर नेक्स्ट आसला कौन ना हाईलैंडलेस ए ग्यार हु लिव्स इन द हाईलैंड बा माउंटेन स्कॉटलैंड गोटे जगह जो झीटी बास करता स्कॉटिक्स बोली कहुच्छी बा हाईलैंडलेस बोली कहुच्छी तापर आसला मिलांकुली स्ट्रेन व्हिच मीन्स इज सैड सॉन्ग दुखर गीत जोटा कहुच्छी तापर आसला ये भेल तार अर्थ हूँ ये भेली बा जहाँ कहुच्छी आमर उपत्यका बोली कहुच्छी क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 एंड 5 देन यू सी एटी प्रोफाउंड आसला डीप बा गभीरतम हिसाब से हाउट अर्थ आसला चांट बा सिंग गीत गाइबा अर्थ आसला वेरी माने अत्यंत क्लांत अनुभव करवा ब्रेन माने ग्रुप ऑफ पीपुल एट हाउंड माने होची प्लेस विजिटेड फ्रिक्वेंटली आम जो जगह केतेले केमिति वास करबा जाती ताको फ्रिक्वेंट बोली कह जाउची एटी आरबियंस एंड द डेजर्ट ऑफ आरबिया द मिडिल ईस्ट बोले पश्चिमांचल गोटे मस्जिद जगह रही से जगह हूँ केवल बाली ही बाली ताको आरबियन सी बोली कह जाउची देन यू सी एटी अम्बुल्ले ऑर्डिनरी सॉन्ग साधारण गीत जो गीतटार कवि अर्थ किसी बुझीपार सत कथा किंतु ता स्वरटा को से मन मन कौन कर गुणगुण होती मोशनलेस विदाउट मूवमेंट स्थिर होगा गतिशील न हवा स्कॉटलैंड ए कंट्री व्हिच इज ए पार्ट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम गोटे युक्तराष्ट्र गोटे खंडे जगह रही आम कौन कहते ना स्कॉटलैंड बोली कहुच्छी व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम टिक द करेक्ट आंसर students you always try to level best where is right or where is wrong but today I have discussed with you that is number 1 is right then you see number 2 beautiful experience have long lasting the effect is not the setting of the poem is the Arabian desert who are the people described in the poem who are the people described in the poem who does the expression islandless refer to why describe her as young solitary highlandless what is the jar Louis
the girl was repining and singing a sad song. Those who are pathos, only one poet, then pathos and valley. Then pick out the words which tell that the girl does not have anyone side. What is the tone of her song? Happy, sad, sooth or sith? Number 1 is right. Then see, the solitary person song remind the poet of the other singer. They are poet or the pathos. Number who sings welcome notes? We are. For whom? What for? Then you see Kakko, also the girl. Who sings welcome notes? Whose voice is thrilling? The Kakko's voice is thrilling. Then you see, where does it sing? The village around us. He sang a song that why he remember his beloved person. The peasant girl's song is not intelligible to the poet because, take the right word, her song is in a that he does not understand. He is far away to her. Number 1 is correct. Then you see, her voice is not clear as she is humming the words. Her, what does the phrase ambulle means? Ambulle, which means is a short song. Then you see, the expression of plaintive numbers refer to said song. Pick out phrase in the poem carrying the same meaning. Melancholy song and habri song boli kuhajauchi. What does the poet mean to say? As if her song could ending. Her song is too long to end. She keeps on singing and seems not to end. The poet does not want the song to end. The song contained and everlasting universal theme, which number 4 is correct. The poet listen motionless and still because take the girl. The rich melodious voice of the singer holds him maximum spellbound. He was tired after walking uphill. He wanted to learn the words and rhythms of the song. He is rooted to the spot by the girl's beauty. Then you see that the poet listened motionless and still because he wanted to learn the word and rhythms is not easy. He was tired after walking. He is rooted of the spot by the girl's beauty. Number 10. How did the song affect the narrator? The narrator affected by the sweet accord, those sweet accord which was sang the medley's girl. Number 11. In stanza 1 and 2, 4 words and phrase have been so that the girl working in the field in without anyone by the out of these words and phrase. That means it's 4 stanza, number 1, 2, 3, 4, then number 2, 1, 2, 3, 4. The ending line is phrase that called is a rhyming word written by the wordsworth, that is sonnet. Then you see 12. The theme of the solitary verse sung contained sadness. What words are used in place of sad? The sad is melancholy. Then number 13. What are the 2 synonyms for the young girl? Young girl, which means is plaintive, then is maiden. Number 15. A melancholy strain in stanza 2 means sad song. Find out the phrase in stanza 5 with similar meaning. Plaintive song boli kuhajauchi. Number 16. Which word in stanza 5 express the poet's guess? The poet guess the girl is beloved, that person who had not returned yet, so he sang that type of song. Number 1. Describe what picture on the valley and the farm worker you mind as you read the poem. The poem gave us an idea, the central idea and gist idea, and also like kinds of the scenic of the village and landscape area that all totally covered valley. In the alone, the medley's girl is always trying to level best herself and forget it the hard work like the beloved person. Number 2. Why do you think Wordsworth has chosen the song Nightingale and Kakko for comparison with the solitary song? When the girl worked hard and sang a song, the beloved person that competitive with the poet Kakko, also nightingales. Number 3. Whose song is sweeter according to the poet,
the nightingale, the cuckoos, or the solitary bird. Whose song is sweeter? The solitary bird song is sweeter by poet. Let's write. Number 1. The poet cannot understand the words of the song, yet several possibilities about to each. Then in the diagram below of the possibility, read the stanza 5 and 6 and find out the match each work in pairs and complete the diagram. Correct page in the blanks. One is done for you. Death or illness of a love. The girl also compare with everyday routine. The girl is reaping and singing. What is the theme of the solitary? Disaster of the calamity in the past. Disaster, calamity of the past, which means is remind the person. In stanza 2, 3 and 4, the poet compares the solitary bird with that of the nightingale and the cuckoo. On the basic reading the poem and your imaginary complete the faith. The girl sang a song. That sing would not understand by the poet, but he compared with the song nightingale and cuckoo, also a madness. With required information, fact work in group 4, then the find with other in a brief class discuss. Solitary bird, nightingale, cuckoo. Scottish Highland. Scottish Highland, average and also plaintive. The poet which means its narrator, also a describer, holds in space that a average and island. Then you find out the paragraphs for each sub table using information. The solitary bird was singing a melodious song as she crops in the deep valley of the Scottish Highland. The poet chants and near the tone enchanted the poet. It is the mesmerized and spellbound. The poet stood motionless and listened to the song. Imagine that you are the poet, William Wordsworth. Just after the solitary bird, you will continue on your walk and reach to describe your experience to your younger brother, what you felt. I also poet, consult with his younger brother. The place was adventure, not only pathos but also poet. Sometimes that person is going to that place and sing a song, a madness girl is described by the poet. The poet's guess is that the solitary bird's song contains a theme of the sorrow, loss or pain. Touching tone and melody of the song holds the poet mesmerized and spell out. Just now I was walking. Then you fill in the blanks. Day after tomorrow I will consult with you what is the necessary of the fill in the blanks. Today this much, all the best, my dear and far and student. Today this much.